Papers to be laid on the table. Shri Gajendra Singh Shekhawat. Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 2-1 in today's list of business. Dr. Jitendra Singh. Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2(2) in today's revised list of business. Thank you, Chairman sir. Shri Arjun Ram Meghwal. Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay the papers on the table of the House mentioned against my name pertaining to the Ministry of Law and Justice at serial number 2 within bracket 3 in the today's revised list of business of Rajya Sabha. Thank you. Shri Sripad Yasho Naik. I rise to lay on the table of the House the paper mentioning is my name at serial number 2 in bracket 4 of today's revised list of business. Dr. Chandrasekhar Pemasani. Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Susri Sobha Karandlaje. चेयरमैन सर, मैं आपके अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 6 पर उल्लेखित दस्तावेज सदन पर पटल पर रखती हूँ. श्री कीर्तिवर्धन सिंह. Well, Chairman sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House the papers related to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as mentioned against my name at point number 7 of serial number 2 in today's revised list of business. Thank you, sir. Shrimati Raksha Nikhil Khadse. Honorable Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House a copy of each paper's Hindi and English version as shown against my name at serial number 8 in today's list of business. Thank you. Shri Pavitra Margarita. माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के अनुसार क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित कागजातों को सदन के पटल पर रखता हूं. Message from Lok Sabha Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 11th December 2024 passed the Railways Amendment Bill 2024. I lay a copy of the said bill on the table. Reports of the Committee on Public Accounts. I'll take your name. Shri Shakti Singh Gohil. We must follow the rules. With your kind permission, Honorable Chairman sir, in today's list of business at serial number 3, I rise to lay the reports of Public Accounts Committee, a copy in English and Hindi of the following reports of the Committee of Public Accounts 2024-2025. First, a second report on action taken by government on the observation recommendation of the committee contained in the 80th report 17th Lok Sabha on loss of revenue due to irregular tax exemption, South Asian University. 2. Third report on action taken by the government on the observations recommendation of the committee contained in the 81st report 17th Lok Sabha on procurement of ex-engineers. 3. Fourth report on action taken by the government on the observations, public recommendations of the committee contained in the 19th report, 17th Lok Sabha on avoidable expenditure on procurement of channels, airboxes, Banaras Locomotive Works. Thank you, Chairman sir. Reports of the Department-related Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj, Shri Vaiko. Not good. Shri Sant Balbir Singh. ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ
ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਭਾ ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Statements of the Department related Parliamentary Standing Committee on Water Resources, Shri Sanjay Kumar Jha। माननीय सभापति महोदय, विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा दी गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाली विवरणों की एक एक प्रति अंग्रेजी हिंदी में सभा पटल पर रखता हूं। अनुदान मांगे 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 21वीं प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों से संबंधित 28वां प्रतिवेदन ATR और भूजल एवं मूल्यवान किंतु घटता हुआ संसाधन के संबंध में विभाग संबंधित जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 22वें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशों से संबंधित 25वां प्रतिवेदन ATR सभा पटल पर रखता हूँ। Statements of the Committee on Welfare of Other Backward Classes, Shri Shambhu Sharan Patel। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथासूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 9वें, 24वें, 28वें, 29वें और 31वें की गई कार्रवाई प्रतिवेदनों 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले 5 विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। Shri Dharmendra Pradhan to move a motion for election of one member to the Court